अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ और ट्रेड के बारे में पढ़ा। तो इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पे डिलीवर करने जा रहे हैं। स्पेनिश एंड पुर्तगीज़, द फर्स्ट यूरोपियंस टू conquer the America. The first Europeans to conquer the America. Dear students, the Spanish and Portuguese were the first Europeans to conquer America. The Spanish and Portuguese, they were the first Europeans जिन्होंने अमेरिका को कॉन्क्यर किया मिड 16th सेंचुरी में। जो ये कॉन्क्वेस्ट था, it was not just the result of the superior firepower, it was not just the result of military power, it was also due to the germs of diseases like smallpox, which the Europeans took with them. And the America's original inhabitants, they had no immunity against these diseases that the Europeans that came from Europe. We can say that disease came from Europe, and the America's inhabitants, they had no immunity against these diseases. So we can say, dear students, smallpox, it proved to be a deadly killer and decimated whole community. Decimate होता है to destroy people, to destroy plants, to destroy animals, that is decimate. तो ये smallpox जो था, it proved to be deadly killer and decimated whole communities. The first governor of the Massachusetts Bay Colony in New England, जो पहले गवर्नर थे मैसेच्यूसेट्स के, the first governor of Massachusetts Bay Colony in New England, name of the governor was John Winthrop. John Winthrop wrote in May 1634 that smallpox signaled God's blessing for the colonists. उसने क्या लिखा? That the smallpox, it proved to be God's blessing for the, it signaled God's blessing for the colonists. Until the 19th century, we can say until the 19th century in Europe, poverty, hunger, overcrowded cities, diseases, religious conflicts, and the ill treatment of dissenters. ठीक है, डिसेंटर होता है जो इस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स होते हैं या कस्टम्स होते हैं, वन हु रिफ्यूजेस दैट बिलीफ्स एंड कस्टम्स, दैट इज कॉल्ड डिसेंटर. एंड द इल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसेंटर्स वायर कॉमन इन यूरोप. ये चीजें यूरोप में कॉमन थी. एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में क्या हुआ? लोगों ने माइग्रेट किया फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका. बाय द 18th century, slaves captured in Africa, the slaves captured in Africa worked in plantations of cotton and in the plantations of sugar for the European markets. उसके बाद हम देखेंगे trade till the 18th century. Trade till the 18th century. Dear students, till the 18th century, China and India were among the world's richest countries. Till the 18th century, China and India, they were among the world's richest countries. From the 15th century, China was forced to restrict its overseas contacts and retreated into isolation. यहाँ पे उसके बाद from the 15th century, China was restricted its overseas contacts. चाइना को फोर्स किया गया टू रिस्ट्रिक्ट इट्स ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स एंड इट वाज रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन. आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है? अमेरिका gradually moved the center of world trade westwards. Later Europe emerged as the center of the world trade. और उसके बाद जो यूरोप होता है, that became the center of the world trade. Dear students, अगले वाले टॉपिक जो
आने वाला टॉपिक है उसमें हम 19 इसमें हमने 16 17 और 18 सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया पिछले वाले टॉपिक्स में। अगले वाले टॉपिक में हम 19 सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स न्यू शेप, कॉर्न लॉज के बारे में पढ़ेंगे, एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट वाज अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।